Good morning. Welcome to Sanjay Godawat IIT Medical Academy. This is Subramaniam, Zoology faculty. In this session, we are going to discuss one of the phylum, that is the first phylum, first metazoans, and one and only one phylum and parazoa, Porifera के बारे में discuss कर लेंगे. Members of this phylum commonly known as sponges. Commonly known as sponges. We have to remember this word. Common names, some phylums को है, some phylums को नहीं दे दिया. We have to remember that common names. Second point is they are generally marine organisms, but not all are marine, and mostly कौन सा? Mostly asymmetrical है. Mostly asymmetrical बोले तो they are not able to produce us the two identical halves or antimeres. Rarely क्या है ये word? Rarely radial symmetrical organisms. Radial symmetrical का example, एक example लेने तो haloclona. This is a one sponge. It shows the, इस body देखने तो एक ऐसे तो ये central point है. ए सेंट्रल पॉइंट से हम ए ऑर्गेनिज्म को एनी एक्सिस में टू इक्वल पार्ट्स से ऐसा डिवाइड कर सकते. ओके, सो रेयरली रेडियल सिमेट्रिकल, मोस्टली कौन सा? एसिमेट्रिकल. ओके, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. ओके, दिस ऑल आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पॉन्जेस. ओके, नेक्स्ट इधर क्या मेंशन किया अदर स्लाइड में? दो पॉइंट्स दे दिया. दीज आर primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Of course, these are kept under animal kingdom है ना. Animal kingdom बोले तो those are metazoans. Okay, so metazoan में these are not exactly eumetazoans. These are multicellular animals, primitive multicellular animals, not highly developed multicellular animals, and they shows the cellular level of organization, but not tissue level of organization. So last क्लासेस में हम डिस्कस किया, इधर ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, सो बट दीज सेल्स आर नॉट अपडेटेड एज विच वन टिश्यूज. क्योंकि बोले तो इधर जो सेल्स है बॉडी में, दोज सेल्स विल बी एक्ट्स लाइक ए इंडिविजुअल यूनिट, दोज आर फंक्शनली नॉट सिमिलर. सो हम टिश्यू कंसिडर करना है तो क्या करना है? तो सेल्स, their structure, function and chemical composition should be similar होना है. But here these cells are different in their function. Functionally they are not same. Individual units जैसा काम करते. Means division of labor occur among the cells but not as a tissues. So that's why here these are not updated as tissues. So group of cells are present also. The two here cellular aggregations. Sponges are congress of cells, aggregations only, loosely arranged, loosely attached, but not tightly packed. These are. That's why these are not updated as tissues, cellular level of organization only. Next, sponges have a water transport. ये यूनिक फीचर बेटा, इंपॉर्टेंट, रिमेंबर करना ये वाटर ट्रांसपोर्ट. एंड नेक्स्ट वन इज अ वाटर कैनाल सिस्टम. ओके, सो सेम और एक फाइलम है इखाइनोडर्मेटा. इखाइनोडर्मेटा में हम क्या रिमेंबर करना है? उधर वाटर वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट. दिस इज वाटर ट्रांसपोर्टर, वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट. ये अपडेटेड है. ओके, सो कौन सा? वाटर कैनाल सिस्टम or water transport system is a primitive form. उसका updated form is a water vascular system that is present in the echinodermates. Be careful. Water transport or water canal system is not equal to water vascular system. ये primitive है. Okay, वो last developed है. Okay, now from this slide we have to remember that these organisms are primitive multicellular, first metazoans, first animal kingdom phylum, and they exhibits the cellular level of organization. And next one is they have unique feature, distinct feature, that is water transport or water canal system. ये water transport, water canal system, इसको separately भी हम discuss कर लेंगे. इसमें types भी है, वो जरूरत नहीं हमको. ये water transport or water canal system. So इसमें क्या होगा? Water enters through the minute pores known as ostia. ये देखो, water enters through the
minute pores into the organism. Okay, इधर organism अंदर कहाँ जाते हैं? Centrally एक cavity होगा, that is called as a spongocele. So from water from outside enters into the central cavity, that is called as spongocele. ये openings जो होते हैं ना, that openings are called as a ostia. Body is made up of number of minute openings है ना, poriferans बोले तो वही ना meaning. So now here these minute openings only called as ostia. They are leads into the central cavity, that is only called as a spongocele. Now from where this water जो अंदर आ गया ऐसा, then इधर जमा होते, बाद में इधर से बाहर भेजते. Okay, so then from exterior to interior, interior to exterior it is. So this is the pathway of water. Okay, so through the ये अंदर आने के समय में minute openings, those are called as a ostia. And बाहर जाने के समय में, so this is a large common opening, that is called as a osculum बोलते, osculum बोलते इसको, osculum. Okay ना? So now this is the pathway of water. Water from exterior, outside से through ostia it will be leads into spongocele. Spongocele से osculum, that is a common opening, उससे फिर भी बाहर आते, बाहर से फिर भी बाहर आते. इसके बीच में ostia small opening and spongocele cavity and another one is a osculum. ये तीन कंपलसरी आर्डर में होना ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, इसलिए मैं ज़्यादा इसको हाईलाइट किया. कंपलसरी हमको वीकेंड्स में ऐसा कंपलसरी मिलेगा ये. ओके, सो दिस इज द ऑर्डर: ostia, spongocele, osculum. ये मेन है. ऑस्टिया है तो न्यूमरस, ऑस्कुलम है तो एक ही है. एंट्रेंस अलग अलग हो सकते, एग्जिट है तो एक ही हो सकते. ओके, सो इसके बीच में पानी अंदर एंटर हो गया, बाहर एग्जिट होने के समय में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा एंड ट्रैपिंग ऑफ फूड मटेरियल्स, मीन्स फूड गैदरिंग एंड वेस्ट मैटर को रिलीज करने का एंड रिप्रोडक्शन, सो मेनी एक्टिविटीज विल बी गोइंग टू अकर थ्रू दिस विच वन वाटर कैनाल सिस्टम. ओके, ये ऑर्डर है तो कंपलसरी रिमेंबर करना है बेटा. लेट अस सी दैट. नेक्स्ट पॉइंट, द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्प्स इन दी कौन सा चीजेस में हेल्प करते, दैट इज फूड गैदरिंग. ये देखो, पानी अंदर आ गए बोले तो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स, दोज आर ट्रैप्ड बाय, इधर एक लार्ज फ्लाजेलम होते, रिमाइनिंग ये कॉलर सेल बोलते, चोइनोसाइट कॉलर सेल, इधर कॉलर होगा. ड्यू टू बीटिंग ऑफ दिस विच वन फ्लाजेलम, जस्ट लाइक साइक्लोन, पानी में एक साइक्लोन जैसा क्रिएट होते हैं ना, वैसे क्रिएट करके देन दिस फूड मटेरियल्स विल बी गोइंग टू, वाटर विल बी अलॉन्ग विद द फूड मटेरियल्स एंटर्स इनटू दिस वन एंड देयर दे आर गोइंग टू ट्रैप्ड एंड दे विल बी फॉर्म्स लाइक विच वन, इधर कौन सा फूड वैक्यूल्स फॉर्म हो जाएगा. दिस फूड वैक्यूल्स विल बी गोइंग टू डाइजेस्ट द फूड मटेरियल्स. ओके, सो दिस इज which one, फूड गैदरिंग के लिए. ओके, नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेटरी गैसेस आर गोइंग टू एक्सचेंज, इधर से फ्रेश वाटर आते हैं ना, सो दिस आर गोइंग टू अपटेकन बाय द सेल्स, ऑक्सीजन को अपटेक करते, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को दे आर गोइंग टू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एयर विल बी गोइंग टू सेंड, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज गोइंग टू सेंड्स आउटसाइड. ओके, नेक्स्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट. सो रिमूवल ऑफ वेस्ट आल्सो, सो फूड मटेरियल को लेते हैं ना, देन इट विल बी गोइंग टू रिलीज द नाइट्रोजनस वेस्ट. सो नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये पूरा बाहर भेजते. ओके, वो बाहर भेजने के लिए पानी अंदर पाले नहीं आते, अंदर का पानी पाले बाहर भेजते. वो कैसे होते बोले तो ये choinocytes है ना, those choinocytes has the flagellum, long flagellum, single flagellum, all flagella will be going to beats at once at one direction. So ये अंदर से पानी को बाहर पुश करते, then पानी बाहर आने तो बाहर का पानी फिर भी अंदर आते, क्योंकि इधर प्रेशर कम होगा ना, so पानी कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, बाहर ज़्यादा पानी, so हाई प्रेशर से लो प्रेशर को पानी, फ्रेश वाटर will be going to accumulated here. Okay, sometimes ये aquatic habitat में कोई केमिकल्स मिक्स हो गया, देन ऑर्गेनिज्म क्या करते, इधर मायोसाइट्स बोल के सम सेल्स विल बी प्रेजेंट अराउंड दिस वन. ये कॉमन ओपनिंग ऑस्कुलम है ना, उस पे मायोसाइट्स बोल के सेल्स विल बी प्रेजेंट एंड दोज सेल्स विल बी गोइंग टू क्लोज दिस ऑस्कुलम. ऑस्कुलम क्लोज हो गए तो पानी बाहर नहीं जाते, सो प्रेशर सेम मेंटेन होगा, बाहर से पानी अंदर नहीं आते. ओके, सो दिस इज वाटर ट्रांसपोर्ट helps in these organisms, means the water canal system helps in the food gathering, respiration and next one removal of waste. Next one,
choinocytes or collar cells lines the sphingosyle and canals. Okay, so here body wall को लेने तो ये body wall में outer cells will be present. These are these cells, flat cells, single layer of cells. These are called as which one pinacocytes, and they forms the pinacoderm. So outer layer of the body is a pinacoderm bolte, and inner layer. So here it is. These are called as a collar cells. They are called as collar cells or choinocytes bolte. That is called as a choinoderm bolte. ये पूरा choinoderm इधर. choinoderm इधर long flagellum will be ये collar है, इसलिए collar cells बोलते. So ये collar cells these are going to beat that flagella at one direction. Then पानी पूरा current create करते, तो they will be going to sense outside. This is ostia. Ostia either guarded by the which one these are called as a porocytes. ये porocytes इसको line करते, बाद में they are going to leads into the which one inside cavity sphingosyle. पानी इधर से बाहर आके, बाहर से अंदर आके, अंदर से फिर भी बाहर जाते. Okay, so pinacoderm, choinoderm. These are the two layers. Pinacoderm is the outer layer and choinoderm is the inner layer. Collar cells. इधर ही एक cell thickness, इधर भी एक cell thickness है. Okay, इन दोनों के बीच में इधर which one gel-like matter will be present. इसमें different variety of cell sites, thisocytes and chromocells, myocytes, different variety of cells along with the spicules. ये spicules will be going to forms the which one endoskeleton-like structure, rigidity provide करते. Calcium carbonate, silica वैसा फॉर्म होते हैं spicules. Those spicules also monoaxial, triaxial, tetraaxial, hexaaxial, different. Triaxial बोले तो ये triangle जैसा, hexa बोले तो 6, एक है तो ये एक ही है, so monoaxial बोलते. Okay, these choinocytes they lines this one cavity. ये देखो choinocytes totally inner layer and this is outer layer. Due to this pinacoderm and choinoderm, some books में क्या मेंशन किया, इसको एक लेयर, इसको एक लेयर, दो लेयर्स है ना, इसको ही जर्मन लेयर्स ऐसा कंसिडर किया. Okay, so that's why they mentioned that as a poriferans also diploblastic organisms. Actually diploblastic consider करना है तो जर्मिनल layers फॉर्म होना है. जर्मिनल layers फॉर्म करने का उतना ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ द उसमें इसको डिप्लोब्लास्टिक ऐसा कंसिडर नहीं करते. ओके, सो इधर स्पिक्यूल्स एंड अमीबोसाइट्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ अमीबोसाइट्स आर प्रेजेंट. ये अमीबोसाइट्स में आर्कियोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Archaeocytes, क्योंकि those are the totipotent cells, they will be modified into any other type of cells. Okay, so this is about choinocytes body wall. Digestion is intracellular. Very good. So इधर ये words compulsory remember करना है बेटा, आपको future में भी use होगा. Digestion two types based on location. So one is extracellular, otherwise known as intercellular, and another one is intracellular बोलते. So extra means हमको पता है outside, और इंटर बोले तो इन बिटवीन द सेल्स बोले तो आउटसाइड ऑफ द सेल्स है ना. सो डाइजेशन विल बी गोइंग टू टेकन प्लेस आउटसाइड ऑफ द सेल्स बोले तो जस्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक्स दैट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक. So this stomach is a organ है ना, organ made up of tissues है ना, tissues made up of which one cells only. Okay, so now इधर हम remember करना है ये outside of the cells बोले तो within the digestive system digestion will be going to takes place in the organ. Okay, so now extracellular or intercellular both are same. Outside of the cells within the cavity of the digestive organs and system digestion will be going to takes place, that is called as a extra or inter. Be careful, हम इधर ऐसा ही confuse होते. extracellular or intercellular बोले तो digestion will be outside. Next one intra means within the cell. So food material को अंदर लेके उसको digest करना है. For example ये cells, ये food material को लेके इधर food vacuoles form होते, then those are going to digested within the cell. So that is called as a intracellular. Okay, intracellular, within the cell digestion will be going to takes place. Next,
the body is supported by a skeleton. Body supported by the generally skeleton only. We have skeleton में भी two types है, वो discuss कर लेंगे. So body is supported by skeleton made up of spicules or spongin fibers mention किया. Spicules or spongin fibers. So इधर spicules spongin fibers कैसा है? ये sponges, उसका body wall में ये components है. Though these are the spongin fibers. ये spongin fibers बोलते हैं. Spongin fibers. Next one is ये spongin fibers. ये spongin fibers. And these are the spicules. ये spicules में monoaxial and triaxial, tetraaxial, biaxial and hexa like a star it is. So this is 1, 2, 3, 4 tetraaxial. This is tetraaxial, monoaxial, triaxial, monoaxial. Okay. So these are variety of, they are made up of calcium carbonate, silica. इसके वजह से sponges को फिर भी different classes वैसा भी divide किया. So ये spongin fibers plus ये spicules, क्योंकि हमारा जैसा bones नहीं होते ना इसमें, इसकी वजह से इधर spicules plus spongin fibers ये दोनों भाई, then these are going to form the rigid which one ये skeleton body wall. Next reproduction के बारे में mention किया. Sexes are not separate. Sexes are not separate बोले तो both sexes present in the same organism. Primitive organism में ना separate reproductive tracts separate organism में नहीं होते. दोनों systems same organism में होते. इसीलिए इसको बोलते hermaphrodites बोलते. Hermaphrodites, these are hermaphrodites. Okay, and that is single organism contains the both reproductive tract, male and female reproductive tracts. Okay, sperms and eggs are produced by the same individual. Both tracts होते हैं ना, इसलिए both gametes are going to produce. And sperms are typically produced by modified choanocytes. इधर A points NCERT में नहीं है बेटा. So out of NCERT, लेकिन ये गलत नहीं है. Okay, sperms are produced by the which one modified choanocytes. ये देखो, ये choanocyte है. So this choanocyte will be going to produce this sperm. Sperms are produced by the choanocytes. Okay, so this is only choanocyte. Produces. This is modified and produces the male gametes. And next one, previous class, अभी मैं explain किया ना previous slide में, archaeocytes. Okay, so this is a pinacocytes. collencyles and next one is here is mesohyle बोलते ये gel like matter को and next one choanocytes ये इधर cavity होते okay and this is are the spicules variety of spicules will be present here. So these cells will be present in the mesohyle gel like connective tissue is a gel like matter it is. इसमें ये different variety of cells amoebocytes archaeocytes are very important. ये archaeocytes can differentiate with any type of cells और तो नहीं तो ये इधर choanocytes मर गया they will be converted as a choanocytes. नहीं तो पिनकोसाइट्स मर गया पिनकोडर्म को फॉर्म करते नहीं तो स्पिकुल जैसा प्रोड्यूस कर सकते नहीं तो दूसरा ट्रोपोसाइट्स जैसा नहीं तो थीसोसाइट्स जैसा कौन सा भी सेल्स जैसा मॉडिफाई हो सकते. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज आर्कियोसाइट्स टोटिपोटेंट cells. So these archaeocytes are going to modified as which one archaeocytes modified as which one egg cells. Eggs are produced by the archaeocytes and sperms are produced by the choanocytes. ये देखो choanocytes ये choanocytes produced as a sperms it is and archaeocyte is produced as a egg cell. Then they are going to fuse forms as a zygote and development indirect development होगा इस पे. Okay, देखो sponges reproduce asexually reproduce करते by the methods fragmentation. Okay, by the methods fragmentation. इधर ये sponge को हम pieces कैसा करने तो each and every piece becomes like a individual complete sponge जैसा manufacture होते. And next one another process is budding. So ये budding. So इधर से small bud will be going to develop. हम budding process से बोले तो hydra नहीं इधर भी होगा. Okay, so इधर ये gradually grown होते. Then when it is going to get separated from this one, it will becomes like a new individual. So asexual reproduction by the fragmentation and budding process. And sexual reproduction इधर gametes will be going to form and they are going to fuse. Produces the zygote and next generation it is. So इधर देखना है पड़ता. So these are hermaphrodites है ना ये they are going to produce us the both type of gametes and those are egg cells they are going to fuse. ये produce किया gametes male gametes को ये fertilization है तो self नहीं cross fertilization होते बेटा. इधर से
गैमेट्स दूसरा ऑर्गेनिज्म से आके दे आर गोइंग टू एंटर इनटू दी विच वन ये पोरोसाइट्स है ना, ऑस्टिया से मीसोहाइल पे एंटर होते. देर here already archaeocytes modified as which one egg cells. ये male gametes will be going to fuses with this female gamete and zygote and embryonic stages will be going to form. These are going to release into which one central cavity. So these are released outside and these are of course adults are which one stationary organisms, sessile it is, but larval forms will be going to mobilize. They are going to release outside and they will be settle on the substrate base bottom of the sea or ocean rocks पे develop होके then they will be becomes like a new individual. Either fix होगा, once it is fixed throughout life it is fixed only, then it will be going to grown and again it is also shows the asexual or sexual life cycle. So larval form is present. This is indirect डेवलपमेंट होते. सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बाहर नहीं होते. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इट इज ओके. इधर बाहर दिखा दिया लेकिन एक्चुअली दिस इज करेक्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ये समझने आने के लिए मैं ले लिया ऐसा. ओके. एंड डेवलपमेंट इज विच वन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है वो डेफिनेशंस. सो इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल बोले तो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर गोइंग टू फ्यूज एंड दे फॉर्म्स द जाइगोट, देन दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होने तो बॉडी पे आउटसाइड, बॉडी में नहीं है, बॉडी से बाहर रिलीज होके देयर फर्टिलाइजेशन वाज टेकन प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एंड internal fertilization बोले तो male gametes are released into female organism. There within the female body are कौन सा भी, so within the body fertilization will be going to take place, that is called as a internal fertilization. Gametes are fused outside, that is external fertilization. Gametes are fused inside, that is called as a internal fertilization. So zygote form होगा, then बाद में it will be indirect development है ना. Larval forms, free swimming larva, इसमें parenchyma and amphiblastola ये दोनों larval forms है. Those are going to undergo the metamorphosis क्योंकि these are not similar with the mother organisms है ना. So then they are undergo the metamorphosis process, then finally becomes like a which one adult organism. So here development fertilization है तो external internal हम देखा. Development is direct indirect development क्या है. Okay, so direct development बोले तो mother से यानी egg से larva form आ गया. That larva is not similar with the adult. It is not similar with the adult or same species. For example, हम frog का larva क्या है? Tadpole है. Tadpole is similar with the fish or frog similar with the fish but not frog. ये larva undergoes the development and finally becomes like aquatic organism से terrestrial organism को आ सकते, like frog it is. It will take some time. Okay, so then it is called as indirect development. Means larva which is produced by the egg hatching होने के समय में larval form जो release होते, those larval forms are not equal to their species or mother organism. After few days it will be going to changes its morphological characters and becomes developed and finally it is developed which is equal to the mother or same species. That is called as indirect development. Simply जो फर्स्ट एग से बाहर आते, that is larva or pupa whatever it may be, that is not similar with the same species. Okay, so that is called as indirect development. Direct development बोले तो mother is giving directly birth to the young one or egg से वो hatch होके बाहर आते, then that is similar with the same species organism, that is called as a direct development. So larval forms है तो indirect development, larval forms नहीं तो direct development, simply we can say that. Okay, so this is direct development, indirect development. Next one, fertilization external and internal. Okay ना, इसमें ये organisms में तो internal fertilization and indirect development. Okay, important points है. Larval forms mention करना NCERT में नहीं है, just for our purpose I mentioned that, no need to remember. क्वेश्चन है तो उस पे नहीं मेंशन किया. सो फाइनली दिस इज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट, हमको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया. सो दिस कैनाल सिस्टम जो है ना is majorly 3 types. Of course, इससे भी types है, वो हमको जरूरत नहीं. So this is a Ascon type, very simple type of water canal system. इधर पानी directly from outside to inside स्पांगोसिल को आ सकते हैं. There is a Ascon type.
अस्कोनाइड. नेक्स्ट वन साइकॉन टाइप है तो इधर से पानी एंटर होने के बाद ये इधर से. So there is a large complexity will be going to increases. Canals will be going to increases. इधर देखो पानी बाहर से अंदर आना है तो इधर से इधर आके इधर आके इधर से इधर आके. So finally it is going to travel outside. Okay, so this is a leuconoid. So asconoid, cyclonoid, leuconoid, different variety of water canal systems it is. Okay ना. So ये हमको NCERT में mention नहीं किया तो remember करने का भी जरूरत नहीं. Just if you have interest you can just differentiation के लिए मैं ले लिया इसको. Yes, examples बेटा. Characters complete हो गया. So cycon is a scientific name. इसका common name skypha बोलते. So that is original picture. ये NCERT का. ये organisms ये flower vase जैसा है ना. ये they can shows the radial symmetry. Okay, previously एक diagram में हम देखा starting में. So this is also. These two are shows the radial symmetry. Remaining mostly which one asymmetrical होगा. Next one use sponge. This is known as a bath sponge. ये scrubber use करते हैं ना हम bath करने के लिए. So वैसा ही इधर ये organisms shape will be ऐसा ही होगा. So that's why it is called as a bath sponge बोलते. This is use sponge या bath sponge. ये ऐसा होते. Next spongilla. Freshwater sponge it is. Originally diagram it is. Okay. So this is NCERT का diagram. Okay. ये common names जो दे देना बेटा वो important है. Okay. So spongilla, freshwater sponge, and next one is here it is Euspongia bath sponge, and next here it is Cycon skypha. Okay. Common names and scientific names दोनों को हम remember करना ही. ओके बार बार रिपीट करना है. रिपीट करने तो रिमेंबर होगा नहीं तो भूल जाएगा हमने. ये एक्स्ट्रा पॉइंट है. और एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली. जेम्यूल्स फॉर्मेशन बोलते. ये जेम्यूल्स बोले तो क्या है. दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. दे आर इंटरनल बोर्ड्स मेंशन किया. एक्सटर्नल बोर्ड्स हम देखा. ये इंटरनल बोर्ड्स इधर क्या है बोले तो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में ही अनफेवरेबल कंडीशंस. ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस अभी स्पॉन्जिला देखा ना. सो फ्रेश वाटर में पानी ज्यादा नहीं हो सकते. समर में वो पॉन्ड यानी लेक ड्राई हो सकते. ड्राई होने के बाद क्या होगा ये ऑर्गेनिजम्स पानी नहीं तो मर जाएगा. सो देन बिफोर दैट ड्राइंग ओके ये आइडेंटिफाई करते pH ऑफ वाटर विल बी गोइंग टू चेंजिंग. वाटर एवापोरेट होते हैं ना pH चेंज होते. देन दे आर गोइंग टू फॉर्म से एक रिजिड बॉडी वॉल. ये पूरा ये स्काई ब्लू कलर में है ना. सो इट इज बॉडी वॉल ओनली. बॉडी वॉल वेरी रिजिड. इट इज गोइंग टू रेसिस्ट द टेम्परेचर pH. ओके अनफेवरेबल कंडीशंस को पूरा रेस्ट करते. तो इसमें क्या है अभी हम डिस्कस किया ना आर्कियोसाइट्स बोल के. Archaeocytes, totipotent cells. These archaeocytes will be going to gathered here and they are going to surrounded by a tough wall. So during this entire summer, this wall will be going to protect this internally archaeocytes. So when summer complete हो गया and again rainy season आ गया, पानी आ गया, then that पानी को absorb करके इधर opening होते. So this open, through this open, water will be get inside and these are going to release it outside. Each and every archaeocyte becomes like a complete individual. Sponge को form कर सकते. Okay, so these are called as gemmules. Freshwater organisms में ही ये form होते during unfavorable conditions. Okay, so these gemmules internal boards is nothing but modified archaeocytes. Okay ना? So ये थोड़ा सा extra information. Now sponges are divided. Phylum Porifera sponges divided into 3 classes. Just हमारा सिलेबस में NCERT में नहीं है. NTA सिलेबस में भी ये इन्वर्टिब्रेटा को फाइलम्स तक ही देखना ही. क्लासेस ऑर्डर का जरूरत नहीं होते. जस्ट for idea we are going to see in that just what is the phylum Porifera and 3 classes. Calcarea, Hexactinellida, Demospongia. This is classified based on the spicules, spongin fibers जो है ना. So based on that they are going to divide these things. Okay, 3 classes will be. Now phylum Porifera complete हो गया बेटा. So a few questions we are going to solve that. Read that first question is what they mention here and choose the correct option. See this one. In case of poriferans, the spongocele, poriferans में spongocele will be present.
that spongocele is lined with flagellated cells called as, हम देखा ना अभी तक flagellated cells which are ये flagellated cell, collar cell ये, so इसको बोलते choinocyte. Okay, so then which one? Ostia बोले तो opening है. Osculum, this is also opening. Next one, choinocytes. These are the cells which is lines the cavities. Okay, spongocele also. Mesenchymal cells नहीं होते. So correct option कौन सा? Third option, choinocytes. Okay, let us see then another question. Read the question and choose the correct option. Okay, जल्दी करना है बेटा. Now, question is in most simple type of canal system, most simple type asconoid. So canal system of poriferans, water flows through which one of the following ways. So pathway of water को हम identify करना है correct sequence. So first of all कौन सा? Ostia. ऑस्टियो से पानी स्पॉन्गोसिल को आते, स्पॉन्गोसिल से कौन सा? आस्कुलम, आस्कुलम से बाहर जाते, बाहर से बाहर आते. सो इसके बीच में ऑस्टिया, स्पॉन्गोसिल एंड आस्कुलम बाहर आते. सो दिस इज ऑर्डर एक्चुअली. सो ऑस्टिया करेक्ट ओनली, स्पॉन्गोसिल करेक्ट ओनली, आस्कुलम करेक्ट ओनली, आउटसाइड करेक्ट ओनली. सो एवरीथिंग इज करेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट वन इज स्पॉन्गोसिल गलत है, ऑस्टिया गलत है. सो ऑस्टिया से स्पॉन्गोसिल के आते, सो सेकंड ऑप्शन गलत है. थर्ड वन इज आस्कुलम. आस्कुलम बोले तो रिवर्स में नहीं आ सकते ना. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पॉन्गोसिल, स्पॉन्गोसिल से आस्कुलम. ये ऑर्डर गलत दे दिया, रिवर्स दे दिया. नेक्स्ट वन आस्कुलम, ऑस्टिया एंड ओके स्पॉन्गोसिल, ये भी गलत है. सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन होते बेटा. ओके, इसलिए वो एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम ले लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन एंड गेस द ऑप्शन. क्वेश्चन इज which of the following is a freshwater sponge? ये देखो freshwater sponge. Okay, common name पूछा, हम scientific name को identify करना है. Yes, Euspongia. Euspongia is which one? This is a bath sponge. ये freshwater नहीं है. Next one, Euflectella. So this is sponge only, but it's not freshwater. This is also marine. So this is spongilla. This is a freshwater sponge and skypha. This is also marine. Sea में, ocean में होते. Now freshwater कौन सा? ये third option is correct. Not first, second and fourth option. Third option only correct. Okay. So next question. Yes, diagrammatic type of questions. ये भी नीट में थोड़ा सा rarely पूछ रहा है, less frequent. Now question is examine the figure A, B, C. वो एग्जामिन करके क्या बोलना है? ये which one of the following four options all the animals poriferans are correct. So ये A, B, C को correct इधर names को choose करना है. So first one skypha, yes correct only, and second one Euspongia, bath sponge, and third one spongilla. Yes, first option only correct. These are remaining options. Euspongia, ये तो Euspongia नहीं है. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो ये स्पॉन्जिला, ये स्पॉन्जिला नहीं है. सो दिस इज स्काइपा. नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन यूस्पॉन्ज, नो. तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन गलत है. फर्स्ट ऑप्शन ओनली करेक्ट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट. सो असर्शन मेंशन किया. असर्शन बोले तो एक स्टेटमेंट देते, रीजन बोले तो वो स्टेटमेंट का ये रीजन होते या नहीं हम चेक करना है. रीजन में मोस्टली डेफिनेशंस हो सकते, एंड नेक्स्ट वन इज मे बी देयर फंक्शंस आल्सो, मे बी देयर स्ट्रक्चर आल्सो, बट एग्जांपल्स मे नॉट एज अ रीजन. ओके, एग्जांपल दे दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करना है. ओके, नाउ असर्शन दे दिया choinocytes are collar cells. Okay, choinocytes को बोलते collar cells. Line the spongocele and the canals. Yes, correct only. Of poriferans, correct it is. Reason क्या दे दिया? Poriferans possess the spicules or spongin fibers. ये भी करेक्ट है, लेकिन ये रीजन नहीं होते. रीजन क्या है? ये स्पॉन्गोसाइट्स, स्पॉन्गोसेल्स, ओके, स्पॉन्गोसिल में ये कौन सा? choinocytes will be going to present, and they are going to lines that, and they will be push the water from inside to outside. By that, from outside to inside fresh water आ सकते. So either both are correct, but it is not correct explanation. Not correct explanation. So second option is
करेक्ट हो सकते. ओके, ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करने तो आपको समझ में आते. ये नए टाइप ऑफ मॉडल क्वेश्चंस. ओके, सो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है. मे बी लोअर क्लासेस में आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो सकते, लेकिन इधर प्रैक्टिस ज्यादा करना है क्योंकि यही गलत होते हमका. यस, थैंक यू सो मच. सो पोरिफेरा कंप्लीट हो गए बेटा. सो वी कैन meet in next class with the another phylum. Thank you so much.